Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. As you know that we are discussing tenses. I have made video on present simple, past simple, future simple, also on continuous tense, present, past and future continuous tense, right? Now we are going to discuss about present perfect tense. Although I have already referred to present perfect tense previously, but I want to remind you that present perfect tense actually talks about recent past. माजी करीब के बारे में बात करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर भी बहुत सिंपल है, सिर्फ दो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होते हैं, हैज़ एंड हैव. We use have with I, we, they, you, and we use has with he, she, it, and the name of a single person, right? We always use third form that we indicate with V3. We indicate first form with V1, we indicate second form with V2, and third form with V3. We indicate ing form with V plus ing. Remember that we call third form also past participle and ing form as present participle, right? Uses of present perfect tense. An action that started in past and continues in present. I have already given an example of present perfect tense. For example, have you taken your breakfast? And you say that when you are sitting on the table and the meal is still lying on the table in front of you, right? She has cooked the rice means she has cooked the rice today and it is for the lunch time, and maybe you are going to take rice in the lunch. Add not with the have and has to make negative and interrogative sentences. For example, she has not cleaned the room. Have they cleaned the room? Who has cleaned the room? Right? Next look at uses of present perfect tense. Number 1, to describe an action that started in past and continued in present. ये हम बात पहले भी कर चुके हैं कि ये माजी करीब के बारे में बात करता है, जो बात अभी अभी ख़त्म हुई है उसके बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन एडमिशन इन यूनिवर्सिटी. मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया है, यानी इसके आखिर में है आता है. नॉर्मली आपने आज क्या काम किया है, ठीक है, क्या आपने खाना खा लिया है, क्या आपने अपने कपड़े बदल लिए हैं, इस तरह की बातें आप उस वक्त करते हैं जब आपके सामने एक एक्शन हो रहा है और वो रिसेंट है. टू टॉक अबाउट एन अनफिनिश्ड एक्शन. टू एक्सप्रेस हाउ लॉन्ग वी यूज सिंस एंड फॉर. फॉर एग्जाम्पल कि कोई काम कितनी देर तक जारी रहा है, उसके लिए हम सिंस और फॉर भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वर्कड इन दिस कंपनी फॉर 4 years नाउ, कि मुझे आज इस कंपनी में काम करते हुए 4 साल हो गए हैं. टू एक्सप्रेस लाइफ एक्सपीरियंसेस विदाउट रेफरिंग टू अ स्पेसिफिक टाइम. ठीक है, आप इसके साथ यूज़ करते हैं एवर एंड नेवर. फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू लाहौर, क्या आप कभी लाहौर गए हैं. I have visited Indonesia last month, कि मैं पिछले महीने इंडोनेशिया गया था. To make statements. I have broken the glass but I will buy you a new one. मैंने ग्लास तोड़ दिया है लेकिन मैं आपको नया ला दूंगा. It is used in negative statements. I have not slept well since exam started. जब से एग्ज़ाम शुरू हुए हैं मैं अच्छी तरह से नहीं सो सका हूँ. Present perfect is often used to ask questions. ठीक है, हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या आपने अपना काम ख़त्म कर लिया है. ठीक है. नेक्स्ट, इसी के साथ हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि स्ट्रक्चर कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. हैव और हैज़ दोनों का जो पास्ट है वो हैड होता है. उसी तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेहमद हैड disappeared from the face of earth centuries ago. कई सदियों पहले मेहमद दुनिया से गायब हो चुके थे. पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होता है टू शो ऑर्डर ऑफ 2 पास्ट इवेंट्स, पास्ट सिंपल एंड पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट सिंपल एक साथ यूज होते हैं और उसमें पास्ट परफेक्ट अर्लियर एक्शन को शो करता है और पास्ट सिंपल
بعد میں ہونے والے ایکشن کو شو کرتا ہے. فار ایگزامپل مائی مدر ہیڈ لیفٹ دا ہاؤس. میری امی گھر سے چلی گئی تھی. وین آئی ریچ دیئر. جب میں وہاں پر پہنچی. تو میں بعد میں وہاں پر پہنچی اور میری امی پہلے چلی گئی تھی. تو اس کا مطلب ہے پاسٹ پرفیکٹ ارلیئر ایکشن کو شو کرتا ہے, پہلے ہونے والے ایکشن کو شو کرتا ہے, اور پاسٹ سمپل بعد میں ہونے والے ایکشن کو شو کرتا ہے. ٹھیک ہے. آئی ہیو سبمٹڈ مائی اسائنمنٹ بیفور دا ویکیشن اسٹارٹیڈ. چھٹیاں شروع ہونے سے پہلے میں نے اپنی اسائنمنٹ دے دی تھی. ٹو انڈیکیٹ این ایکشن دیٹ ہیپنڈ ونس ان پاسٹ. زندگی میں ایک دفعہ ہوا. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل شی ہیڈ میٹ ہم بیک ان کالج. وہ اس سے کالج میں ملی تھی. This tense is also used to explain or give reason for something. For example, I had eaten dinner so I was not hungry. میں کھانا کھا چکا تھا اس لیے مجھے بھوک نہیں لگی تھی. Past perfect tense tells us how long an action continued to a point in past. When he graduated, he had been in London for 6 years. جب اس نے گریجویٹ کیا تو اس وقت اس کو لندن میں 6 سال ہو چکے تھے. To talk about imaginary or unreal things in the past, یعنی کہ کنڈیشنلز میں یوز ہوتا ہے جو کنڈیشنل سینٹینسز ہوتے ہیں اس میں یہ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. شرطیہ جملوں میں. ٹھیک ہے. If I had known you were ill, اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم بیمار تھے, I would have visited you, تو میں تمہیں ضرور دیکھنے آ جاتا. ٹھیک ہے. اس کی کچھ اور ایگزامپل ہے. Sam had become a success. Sam تو ایک بہت بڑا کامیاب ہو چکا ہے. Had I driven the car yesterday, اگر کل میں نے گاڑی چلائی ہوتی, I might have known the problems with car, تو مجھے گاڑی کے مسائل کا پتہ ہوتا. I had not told her the reality, میں نے اسے سچ نہیں بتایا. What had I done, میں نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے یہ کافی سمپل ہے, اس میں کچھ اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, اور ہوپ اسٹوڈنٹس کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آتی ہے, اور اگر پسند آتا ہے تب بھی مجھے بتائیں کمنٹ کر کے. اگر کوئی اس میں غلطیاں ہیں, کچھ مجھے امپروو کرنا چاہیے تو وہ بھی مجھے بتائیں, یا آپ جو چاہتے ہیں کہ میں جن ٹاپکس کو ڈسکس کروں تو وہ بھی مجھے بتائیں پلیز. آپ کی انکریجمنٹ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. تھینک یو. السلام علیکم.